My name is Priya Kumari. I am a student of Jagannath Jain College, Jhumritilaya, Kodarma, which is a constituent of Vinova Bhave University, Hazaribagh. I am going to discuss about how to report phishing emails and detection of email phishing attack and preventive measures in this video. So for reporting phishing email, we have to go to the website certain वेबसाइट के लिए certain dash in .org.in पे जाएंगे। उसके बाद रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इंसिडेंट रिपोर्टिंग है। इस इंसिडेंट रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा कि रिपोर्टिंग अ सिक्योरिटी इंसिडेंट। अ कंप्यूटर security incident is any adverse event whereby some aspect of a computer system is threatened with loss of confidentiality, disruption of data or system integrity, denial of service availability. Any organization or corporate using computer system and network may be confronted with security breaches or computer security incident. By reporting such computer security incident to certain, the system administrator and user will receive technical assistance in resolving these incidents. This will also help the certain to correlate the incident thus reported and analyze them, draw inferences, disseminate up-to-date information, and develop effective security guidelines to prevent occurrence of the incident in future. रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट के लिए ईमेल पे जाना होगा incident@in.org.in। इसके लिए हेल्प डेस्क नंबर है और फैक्स नंबर भी है। कंटेंट ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट है जिसमें हमें इंसिडेंट के अकरेंस का टाइम मेंशन करना है। फिर इंफॉर्मेशन कि सिस्टम या नेटवर्क में क्या अफेक्ट हुआ है उसको बताना है। उसके बाद क्या सिम्टम्स ऑब्जर्व हुआ वो बताना है। उसके बाद रिलेवेंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन सच एज सिक्योरिटी सिस्टम डिप्लॉयड, एक्शन टेकन टू मिटिगेट द डैमेज, ये सारा चीज़ को हमें बताना है। उसके लिए यहाँ पर एक लिंक है सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म। इस फॉर्म में जब हम लोग जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस क्या इंसिडेंट रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई एम द अफेक्टेड एंटिटी या रिपोर्टिंग इंसिडेंट अफेक्टिंग द अदर एंटिटी। यहाँ पे दो ऑप्शन है कि ये रिपोर्ट जो कर रहा है वो खुद अफेक्ट हुआ है या फिर किसी दूसरे को उस इंसिडेंट से अफेक्ट हुआ, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद उसका नाम यहाँ पे डालना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम, फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस, और फिर जो इंडिविजुअल का था या रिपोर्टर या फिर ऑर्गेनाइजेशन का था उसका ईमेल आईडी वगैरह डालना है जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। फिर बेसिक इंसिडेंट डिटेल डालना है। इसमें बताना है कि किस तरह का इंसिडेंट हुआ है, टारगेटिंग, स्कैनिंग या प्रोबिंग ऑफ क्रिटिकल नेटवर्क्स या सिस्टम्स है, या फिर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ क्रिटिकल सिस्टम्स या इंफॉर्मेशन है। थर्ड है अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ आईटी सिस्टम्स या डेटा है, या डिफेंसमेंट और इंट्रूजन इनटू द वेबसाइट है। चौथा मैलिशियस कोड अटैक्स है।
पांचवा है अटैक ऑफ सर्वर सच एज डेटाबेस, मेल एंड डीएनएस एंड नेटवर्क डिवाइसेस सच एज राउटर्स। फिर आइडेंटिटी थेफ्ट है, स्पूफिंग है, या फिर फिशिंग अटैक्स है, या डॉस या डीडॉस अटैक है, या अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या SCADA एंड ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड वायरलेस नेटवर्क का अटैक है, या अटैक ऑन एप्लीकेशन तथा ई गवर्नेंस या ई कॉमर्स से रिलेटेड है कि डाटा ब्रीच हुआ है या डाटा लीक हुआ है, या अटैक्स ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डिवाइसेस एंड एसोसिएटेड सिस्टम नेटवर्क या सॉफ्टवेयर सर्वर्स है, या अटैक और इंसिडेंट अफेक्टिंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, या अटैक थ्रू मैलिशियस मोबाइल ऐप है, या फिर फेक मोबाइल ऐप्स है, या अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सोशल मीडिया अकाउंट्स, या फिर अकाउंट्स और मैलिशियस सस्पिशियस एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम सर्वर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, या फिर अटैक्स और मैलिशियस सस्पिशियस एक्टिविटी अफेक्टिंग सिस्टम सर्वर नेटवर्क सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिलेटेड टू बिग डाटा एक्सचेंज ब्लॉकचेन कस्टोडियंस वॉलेट्स वायरल एसेट एक्सचेंज 3D and 4D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन्स अटैक और मैलिशियस सस्पिशियस एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग सिस्टम सर्वर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग या फिर अदर। इस तरह का अगर इंसिडेंट है तो वो 13 में जा कर के हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इज अफेक्टेड सिस्टम नेटवर्क क्रिटिकल टू द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, यहाँ पर हम लोग को ब्रीफ डिटेल डालना होगा। फिर उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ अफेक्टेड सिस्टम दैट इज डेली अवेलेबल। फिर डोमेन का URL, IP एड्रेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मॉडल और क्लाउड डिटेल्स वगैरह डालना होगा। फिर अफेक्टेड एप्लीकेशन डिटेल डालना होगा। फिर लोकेशन ऑफ अफेक्टेड सिस्टम डालना होगा, कौन सा सिटी रीजन या कंट्री है। फिर नेटवर्क डालना होगा कि कौन सा नेटवर्क है, 4G 5G। फिर नेम ऑफ द ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल है कि वोडाफोन है। फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट लेफ्ट साइड में डालना है। यहाँ पे अकरेंस ऑफ डेट टाइम डालना है कि कब ये घटना हुआ, उसका समय क्या था, मंथ क्या था, ईयर क्या था, आवर कितना बजे कितना मिनट पे हुआ। फिर डिटेक्शन, उसको कब हम लोग देख पाएँ, कब उसका पता लगा पाएँ कि ये सिस्टम हम लोग का मैलवेयर सिस्टम में आ चुका है या सिस्टम हैक हो चुका है। तो उसके लिए डेट टाइम मंथ ईयर आवर मिनट यहाँ पे है। ये फॉर्म हम लोग को एक्चुअली भरना नहीं है, लेकिन इस फॉर्म से ये पता चलता है कि इंसिडेंट का जब हम लोग रिपोर्ट करेंगे थ्रू ईमेल तो हम लोग को क्या क्या डिटेल पता होना चाहिए। इसके लिए हम लोग अब ईमेल में जाएंगे। उसके बाद ये कंपोज है, यहाँ पे जाएंगे। फिर यहाँ पे अपना फॉर्म में अपना ईमेल आईडी डालेंगे। 2 में यहाँ पर incident@13.org पे जाएंगे और इसको ऐड रिसिपेंट कर देंगे ताकि जिसको हम लोग को सेंड करना वो डालना होगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग डालेंगे कि किस तरह का अटैक हम लोग के पास हुआ है। फिर यहाँ पे एक ईमेल तैयार करेंगे और यहाँ पर ये ब्लू बटन दबा करके सेंड कर देंगे। अगर कोई अटैचमेंट स्क्रीनशॉट वगैरह है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे अटैच फाइल से अटैच करके डाल सकते हैं और उसके बाद हम लोग वो ब्लू बटन को दबाएंगे और सेंड करेंगे। स्क्रीनशॉट वगैरह फाइनेंशियल फ्रॉड में अगर होता है तो उसको रखना है और उसको भी लिंक करके डालना है। या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट है, या फिर अभी जो मैंने मेंशन किया कि किस किस तरह का 13 रिपोर्ट फाइल करने के लिए यूज़ होता है, वो सारा चीज़ को डालना है। और उसके बाद इस तरह से रिपोर्ट फाइल हो जाएगा। इसके बाद 13 में हम लोग फिर से जाएंगे। 13 के वेबसाइट में यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है। ये गाइडलाइंस नॉलेज बेस
के नीचे जो गाइडलाइंस है यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस तरह का हम लोग को सिक्योरिटी गाइडलाइंस है। जैसे यहाँ पे सिक्योरिंग वायरस एक्सेस पॉइंट राउटर्स है, ये सेफ्टी मेजर्स फॉर यूजिंग क्रेडिट कार्ड, क्या हम लोग सेफ्टी मेजर्स लेंगे, या सेफ्टी टिप्स फॉर यूजिंग ईमेल, या सिक्योरिटी IIS 7 वेब सर्वर। इस तरह का बहुत सारा डिटेल है, इसको हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है ताकि अगर किसी तरह का अटैक हो तो हम लोग इमीडिएट एक्शन ले पाएँ, हम लोग के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। इस वीडियो में हम लोग सेफ्टी टिप्स फॉर यूजिंग ईमेल बताने जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और उसके बाद ये पेज खुल जाएगा PDF के फॉर्मेट में कि सेफ्टी टिप्स क्या हो सकता है ईमेल यूज़ करने के समय। तो अवॉइड एक्सपोजर ऑफ ईमेल अकाउंट डिटेल्स सच एज यूज़र नेम पासवर्ड टू अननोन या अनऑथराइज्ड पर्सन व्हाइल यूजिंग ईमेल। दूसरा है अवॉइड अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ ईमेल कंटेंट्स टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड है avoid clicking of web links provided in email message to prevent secretly installation of a malware, example virus on your computer. Fourth है install latest antivirus anti-spyware software and keep them to up to date. उसके बाद है इंस्टॉल पर्सनल डेस्कटॉप यूज़र लेवल फायरवॉल ऑन द सिस्टम। फिर उसके बाद है कीप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपडेटेड विथ लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स एंड पैचेस इन द कंप्यूटर सिस्टम यूज फॉर ईमेल टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीकनेस इन द सिस्टम। उसके बाद है बी सस्पिशियस वाइल ओपनिंग अनएक्सपेक्टेड ईमेल। उसके बाद है डू नॉट ओपन सस्पिशियस ईमेल अटैचमेंट। उसके बाद है स्कैन एन ईमेल अटैचमेंट बिफोर ओपनिंग डाउनलोडिंग टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डाउनलोडिंग मेलवेयर। उसके बाद है यूज इंक्रिप्शन फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग कॉन्फिडेंशियल ईमेल टू इंश्योर द मैसेज कैन ओनली बी रीड बाय द इंटेंटेड रिसिपिएंट्स। फिर उसके बाद है डू नॉट रिस्पॉन्ड सस्पिशियस या बैंकिंग रिलेटेड फिशिंग विनिंग लॉटरी फंड ट्रांसफर ईमेल टू अवॉइड बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। उसके बाद है डू नॉट ओपन अनट्रस्टेड या अननोन ईमेल्स या स्पैम। फिर उसके बाद है इनेबल स्पैम फिल्टर टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ स्पैम या जंक ईमेल्स। उसके बाद कीप अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विथ मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर्स कंप्राइजिंग a combination of alphabet both upper and lower case numbers and a special character. Do not keep your computer unattended to avoid misuse. To minimize the risk of information leakage and account hacking, there are some recommendations to be followed by a user for using email in a secure way. These recommendations are as follow. Avoid exposure of email account details. While opening an email account, do not expose your account details such as name or password to unauthorized or unknown person. Ensure that nobody is watching you behind while entering your password. Exposing email account details such as name or password or both or part of the password may give way to intruders to hack the email account by guessing password or some password cracking tools. Second है avoid unauthorized disclosure of email content. Read email only when it is necessary to avoid exposure to third party or unauthorized person. Many times the content of an email will contain private or confidential data, so to avoid any type of invasion of privacy, to be sure to be cautious of your surrounding and never leave a computer unattended. Lock the computer if having to leave it for any length of time. Third है avoid clicking web links in email messages. Avoid clicking or web links or programs unchecked in email messages. Following the web links of programs that may be part of an email message may lead to secretly installation of malware, example virus or the computers. Fourth है install antivirus software. Users should install latest antivirus software and anti-spyware and keep them updating time to time. Antivirus software helps to protect computer against unknown viruses. Users
can detect and remove the virus before it can do any damage to the computers. Attackers are continually writing new viruses. It is important to keep antivirus software up to date. Antivirus software such as AVG, not an internet security trend, micro, quick hit, etc. are good option. Users should not install multiple or more than one different antivirus software, as multiple installation may give a scanning result against each other. Fifth है cautious with email attachment. Use cautious when opening email attachment, even if they appear to have been sent by a unknown person. Email attachments are a common source of spreading malware, such as virus, bomb, Trojan horse. Some malware can spoof the return address, making it look like the message came from some known source. Take the following precautions. Do not open an email attachment. Seems suspicious, even it is the scanning result indicates that attachment is clean, because that antivirus software may not have the signature, as new viruses are constantly being released. Open attachment that come from a trusted source only, not unsolicited solicited email, as many viruses, worms, and Trojan horse have been known to attach themselves onto them. Opening an infected email attachment may damage or harm the computer. 6. Scan an email attachment before opening or downloading. Scanning email attachment before opening or downloading minimize the risks of downloading malware, example virus. Opening or downloading attachment without a scanning may damage the computer if it is infected. Disable the option to automatically download attachment if this option is already enabled in the email software. 7th, use encryption for sending and receiving confidential email. Send and receive confidential or sensitive messages using encryption to ensure that message can only be read by the intended recipient. Some messages are too sensitive and confidential. Users should use encryption for sending sensitive messages. Email encryption is used to ensure both sensitive and personal information cannot be seen by anyone other than the intended recipient. Email encryption is a process where the actual body is coded using an encryption key. An email message appears either blank or with a block random combination of integers and alphabet. It is intended for confidential information between the sender and the recipient. There are few tools and techniques of encryption. Pretty good privacy PGP is one of the tools to encrypt email messages. The other tools technique include public key encryption like the secure socket layers to encrypt data, and PAM, privacy enhanced mail for encryption, authentication, and certificate based key management. The encryption process is as follows. There are two keys, private key and public key. The sender and the recipient both need to have private key and public key in the form of a digital signature. A PGP key, or the open version of PGP, open GPG key. Both sender and recipient need public key in each other repository. The repository is like a keychain. First step is to exchange each other public keys between sender and the recipient through a signed but not encrypted email, and import keys into recipient. After getting the each other public key and putting into this repository, create an email as usual and select encrypt this to myself from the security option, and then send the email. The email is encrypted using a combination of sender private key and recipient public key, and then sent to the recipient. Once recipient get the email, the indicator at the recipient email show whether or not the email has been tampered with. The certificate is typically a green or red icon in the header. As long as the recipient has the sender public key in this repository, the email will appear normal, otherwise it will be a blank page. Do not respond suspicious banking related emails. Many suspicious emails are being sent and forwarded to
to many email accounts for collecting information. Do not respond or follow such emails. Email regarding updating of bank account details or winning lottery, or emails from person Nigerians requesting bank account details for transferring a big amount of money, $1 million to your account. These are phishing email and are sent from malicious people with intent of collecting bank account details to transfer money from your account to their account. Do not respond, follow such email message. Instead, delete them. Keep in mind that bank never send email message to any customer or clients asking updation of account details. Ninth, do not open unknown email. Lot of emails are received from unknown sources and people for advertising, marketing, or any other purpose. They are all junk and often frustrating, unsolicited, and unwanted email correspond. Do not open or respond such email, instead deleting them. Enable spam filter. Set a spam filter to reduce junk email that could be part of a potential phishing scam or malware. Enabling spam filter can automatically eliminate a large portion of risk. Keep a strong password. Keep a strong so that it's difficult to guess or memorize by a third party. A strong password should have a minimum of 8 characters comprising a combination of alphabet, both lower and uppercase, number, symbol, a special character, and be as meaningless as possible. Do not keep computer unattended. Never keep computer system unattended so that unauthorized person will have an opportunity to alter any file or information or do mischievous. Always lock shut down the computer when not in use. These are the details of phishing emails, how to report phishing emails, and preventive measures in phishing attack and emails. So detection of email is also necessary, and we can detect the email by not clicking the attachment or the opening the link. We have to only read the header file of the email, and then we have to search in the Google search engine and then get the result, where the source of that email, what is the source of that email, and who is the sender. In this way we can protect ourselves from the phishing attack and the phishing attacks and prevent phishing attacks and such kind of crimes, all in. So I conclude and thank you for listening. धन्यवाद.